today's class will be starting with areas. How many of you have already started with the same topic? Are you in between or have covered the topic itself? Almost. See, we are very much clear with the concept of a parallelogram. That is a parallelogram, the diagonal divides the parallelogram into two triangles which are basically congruent with one another. Right? So that means the triangle here in this case ADC is congruent with triangle CBA. Right? So these two triangles are congruent. If the triangles are congruent, that means what? They are absolutely identical. And they are identical means their areas also definitely be the same. So the two triangles which are congruent naturally acquires with their areas also equal to one another. Clear? So area of both the triangles are equal. So if a pair of triangles which are congruent to one another under any congruency, their areas would naturally be equal. And there is no logic. The only thing which we can say as far as the consideration of the conversion of triangles to be congruent in the form of areas to be the same, that they are absolutely identical. They can be superimposed onto one another. Identical है ना? Identical होगा तो obviously उनके areas भी equal होंगे, right? Clear है ये बात? So this is one of the most interesting topic and accumulates with many important theorems, starting with the first one. देखो, parallelogram on the same base, parallelogram on the same base and between the same parallel parallelogram of the same base and between the same parallels are equal in areas. Prove it. This is the very first important fundamental theorem. मालूम है ना आपको इसका? This is very important theorem and is obviously considered to be one of the fundamental theorem out of 5 to 6 fundamental theorem of entire 9th maths class. आपको दो theorems तो जरूर आपके final exam में आएंगी and उसके अंदर one of the theorem that may occur in the examination is the same one, right? तो हम आप इस particular theorem को cover करने जा रहे हैं. Let's consider a parallelogram ABCD. पहले इस theorem की statement को समझते हैं. What the statement says? Parallelograms. That means I am talking about two parallelograms, right? Obviously here it is the single one. So we can convert this into the form of two parallelograms. So we have two parallelograms, one in the form of ABCD and another in the form of EFCD, right or not? So these two parallelograms are on the same base. The base for this one and the base for this one, right, are identical, and they do lie on the between the same parallel. See, CD is parallel with AF or AB. Clear? So as CD is parallel with AB or CD is parallel with AF, that means the parallelogram lies on the same base and between the same parallels. If any pair of parallelograms which are acquired with this situation, right, then they are said to be acquired with the same areas. That's what we need to do, right? Given two parallelograms ABCD and EFCD lie on the same base. Please नहीं ध्यान दीजिएगा. BC and between same parallels DC and
A. Right? To prove area of ABCD is equal to area of EFCD. Right? You will tell me the answer. हाँ तो बताओ. So as we know that the area of parallelogram is equal to base into height, and here we have that CD is the common base, so the base here is equal, and height between the same parallel would be equal because the No, we will not implement the answer of this question according to that because the fundamental theorem. And I tell you one thing: all the fundamental theorem must be executed in terms of the norms of the answer, right? Given through the NCERT or given by the NCERT. Ah. So first one we will take the triangles DAE and CBF. So here we know. कौन कौन सा दोबारा बोल? So DAE and CBF. So हाँ. the two triangles. And so And what? So we may use AAS or SAS to prove them congruent. Excellent. And Then- so therefore their areas are equal. On Right. adding both the areas to DEBC, we get that ABC. Excellent. Yes, that's what we need to implement because that's what the answer is demanded for. कैसे करेंगे इसे? देखो जो उसने बताया हम उसको एक तरीके से समझते हैं. मैंने शुरुआत कहाँ से ली थी क्लास की? That the diagonal of a parallelogram divides a parallelogram into congruent triangles, which are eventually equal in terms of their areas or not. Right? So in this case, we have two parallelograms. Right? And these two parallelograms, according to the given figure, provide us pair of triangles or not. One in the form of ADE and another in the form of BCF. ये दोनों triangles को हम अगर congruent कर देते हैं, the moment these two triangles are congruent, obviously their areas are equal or not. भाई triangle congruent हो गए तो areas equal हुए या नहीं? और जैसे इनके areas equal हो गए, तो this is what? This is a quadrilateral. This is basically a quadrilateral. We can regard it as a trapezium also because this one is parallel with this. But this is basically normally a quadrilateral. Area of this is equal to area of this. Let us consider that this is 1, this is 2. I named these two triangles as 1 and 2. And there is an existence of another figure, third. As 1 is equal to 2 because their areas are equal. Agreed? So I can add 3 on both the sides. 3 is common. अगर मैं दोनों तरफ 3 को ऐड कर दूं तो what the figure would be? 1 plus 3 results into what? A, B, C, D. Agreed? And 2 plus 3 results into what? E, F, C, D. And hence the answer. Clear हुआ या नहीं? बिल्कुल mindfully बैठे हो ना यहाँ पर, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है? The basic concept of the chapter depends upon the statement that the triangles which are congruent must be having their areas equal to one another. ये बात क्लियर है? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होंगे. इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर हमने इस पूरी थ्योरम को एग्जीक्यूट किया है. राइट? तो ये तो हमने देखा है. इसको तेजी से थोड़ा इसको सिस्टमैटिकली देखते हैं. प्रूफ के अंदर हम लेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF. हाँ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? कौन बताएगा? आप दोनों को छोड़कर. Can anybody suggest me that which congruency would be implemented and how to make these two triangles to be congruent? See, here I am not taking you the guess. It's basically the discussion going amongst us. Be bold enough to speak. See. So angle A, so in a triangle ADE, angle A is equal to angle CBF. Excellent. Angle 1 equal to angle 2. You just see that this is a parallelogram. If this happens to be a parallelogram, these two sides are parallel. If these two sides are parallel, AB is acting as a transversal. Angle 1 naturally equal to angle 2. Why? Corresponding angle. Angle 3 equal to angle 4. Why? Again corresponding angle. And being a parallelogram, AD not only parallel with BC
AD is also equal to BC, and hence this side is equal to this side. That makes the triangles to be congruent under AAS. Angle excluded side. Angle excluded side. Triangles are congruent under angle 1 equal to angle 2, angle 3 equal to angle 4, right? And we have AD is equal to BC. इसका भी reason लिखना है. Because the opposite side of a parallelogram are equal. That makes triangle ADE to be congruent with triangle BCF under AAS congruency. That means area of what? Area of triangle ADE is equal to area of triangle BCF. क्या ये बात clear है? Is it clear to you? ये समझ में आ गया ना? And the moment their areas are equal, now area of triangle ADE adding area of EDCB on both the sides. This is first. On both the sides of first. So area of ADE plus area EDCB equal to area of BCF plus area of EDCB. Clear? So area of ADE और EDCB किसके इक्वल होगा? Area of ABCD, and this plus this is what? Area of EFCD. Clear हो गया? Hence proof. The very first important concept of this chapter states that whenever two parallelograms are available to us on the same base and they are situated in a way that they are on the same parallels also, then their areas must be equal to one another. क्या ये बात क्लियर है? इज 100% कंफर्म्ड क्वेश्चन. क्या हटाऊं से? कुछ पूछना है इसके अंदर? क्लियर है ना? So we will be executing some theorems at one go itself. हटाऊं? कुछ पूछना है? बिल्कुल be bold enough to ask anything. तो इस तरीके से हमारी पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम हुई. द सेकंड वन, triangles on the same base and between the same parallels are equal in areas. The next is triangles. देखो triangles on the same base, triangles on the same base and between the same parallels, triangles on the same base and between same parallels are equal in areas. Let's consider the two triangles. देखो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ एक triangle है ABC. Let's consider there is an existence of another triangle EBC. Right? Let these two triangles are on the same base, right or not? Are they on the same base or not? Yes. And between the same parallels. That means BC is parallel with PA given to us. ये भी given है हमारे पास, ठीक है? तो given क्या हुआ यहाँ पर? Triangle ABC and triangle PBC are on same base BC and between parallels PA and BC to prove area of ABC is equal to area of PBC. That's what we need to do, right? So here in this question also we'll be using the same concept, the concept of the very first theorem that states that the parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. वही हम यहाँ यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ.
what I did, I created C curve parallel with AB. Is that clear? C curve parallel with AB, which meets PA produced to Q. Right? To construction, draw C curve parallel with B, which meet PA produced to Q. Agreed? Proof. I'll give you a minute to think about the answer to this question. It will use the very first theorem. Socho. So we can say that parallelogram PBCA and AQBC line on the same base, so they are equal in area. So and diagonal ratio of a parallelogram divides it into a congruent triangle. Which are equal in their areas But in also. areas the same Is the right answer. Very good. That's what I need. Good execution. What is the purpose of creating this construction? में मैंने CQ को parallel क्यों किया है AB के? Because my objective is to create another parallelogram. BA parallel to P. Right? So what I did, I have taken BA, which is parallel to CQ. So we have two parallelograms, P, A, C, B and A, B, C, Q. हमने दो parallelograms को लिया. Are their areas are equal or not? Because they are on the same base and between the same parallels. Right? तो proof के अंदर area of PACB is equal to area of AQCB. Right? Right? Because पूरा reason लिखना होगा parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. You just look at this particular parallelogram. PCX is a diagonal. So PBC is equal to PAC, right or not? Their areas are equal. Now PBC plus PAC accumulates PACB. Right? The sum of this and this triangle makes this parallelogram. And that too, these two triangles are same in terms of their areas, and hence I can say what? That the area of PCB is half of PACB. Agreed or not? The area of PBC is what? It is half of PACB. भाई इसमें किसी को कोई doubt है? So how can you say that PACB is the parallelogram? PACB is the parallelogram. इस केस के अंदर हमने क्या लिया है कि PA एंड BC दोनों पैरेलल भी हैं और दोनों इक्वल भी हैं. इस कंडीशन को हमने एग्जीक्यूट करके चला है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड वी नो दैट इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द parallelogram, if a pair of opposite sides of the quadrilateral are parallel as well as equal, then the quadrilateral happens to be the, ये चीज मैंने लिखी है यहाँ? नहीं, यहाँ लिखना जरूरी है. And PA equal to BC. Is that clear? Then in that case it happens to be a parallelogram. हमने इस कंडीशन को यूज किया है कि जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होगी, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम. अब दोनों के एरिया सेम है तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2. दोनों को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो. So that gives me what? That the area of PBC is equal to area of AB. That's true, right? तो इसका एग्जीक्यूशन जो हमने किया है इस आधार पर किया है कि दोनों ट्राइंगल्स के बेस सेम है और पैरेलल्स जो हैं आपस में इक्वल लेंथ के हैं, राइट? देन वी मेक व्हाट? वी क्रिएटेड द पेयर ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड दैट मेक्स द आंसर सिंपल टू अस. अब जो आपने कहा वो थर्ड थ्योरम में हम इंप्लीमेंट करेंगे. इसमें कुछ पूछना? क्लियर है ना? द थर्ड थ्योरम स्टेट्स दैट लिखो द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल
the median of a triangle divides it. The median of a triangle divides it into two triangles. The median of a triangle divides it into two triangles which are equal in areas. Divides it into two triangles which are equal in areas, right? ज्योमेट्री के अंदर द सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल नंबर 1, नंबर 2 sum of the angles on the same side of transversal, second important theorem, midpoint theorem, converse of midpoint theorem, parallelogram on the same side of the transversal, followed by the previous theorem, this theorem and the theorem which I am about to cover, and 7 theorems of the circle. All are considered to be fundamental theorems. देखो, एक है नॉर्मल थ्योरम, एक है फंडामेंटल थ्योरम्स. फंडामेंटल थ्योरम्स का आंसर जो होगा एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू एनसीईआरटी नॉर्म्स होना चाहिए. उसे हम अपने आंसर्स के थ्रू इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? इसलिए इस बात का ध्यान रखना. दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम. तो इस केस के अंदर मैं यहाँ पर इसका जो एग्जीक्यूशन है पैरेललोग्राम के थ्रू नहीं करूँगा. इसके एग्जीक्यूशन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर. यहाँ हमने मीडियन ली. एक्चुअली राइटर्स ऑफ द बुक जस्ट वांट अस टू इम्प्लीमेंट वेरियस मेथड्स फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट? तो सीबीएसई ब्लूप्रिंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आपने वही काम करना. अभी एडी क्या है? मीडियन. व्हाट यू मीन बाय मीडियन? कौन बताओ? व्हाट द मीडियन डज? हाँ ऋषभ. So it divides the side into two parts. कौन सी साइड? One which it falls. हाँ, तो what is that? BC. It divides BC into what? Two equal parts. Tell me those parts, BD and BC. right? And hence this side is equal to this side. तो given आप लिख लेंगे given a triangle ABCAD is its median. given तो यही है. प्रूव क्या करना है? Area of triangle ABD is equal to area of triangle ACA, right? अब यहाँ अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, राइट? अब एट ए स्केच करते हैं. So here in this case we have the two different nature of triangles available to us. ADC is an obtuse angle triangle and ABD is an acute angle triangle, right? So the area of ADC is what? Half into base into height. अब height AP होगी या AD होगी? Because the height is always be the perpendicular distance from a given point to the base and it happens to be the shortest distance. So AP is the shortest distance rather than AD. In fact, AD acts as a hypotenuse for this right angle triangle. So whether we are talking about the triangle ADC or talking about the triangle ABD, AP acts as a common height for both of them. Agreed or not? तो प्रूफ के दौरान हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज हाफ इनटू बेस क्या है ADC का? BC. और हाइट क्या होगी बेटा? और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बेस क्या होगा? BD. और हाइट क्या होगी? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. और DC और BD इक्वल है या नहीं? गिवन है, राइट? DC एंड BC इक्वल है तो दोनों के राइट साइड सेम हो गए या नहीं? दोनों में हाफ है, दोनों में AP है, DC और BD सेम है. Obviously these two, that once the right sides are same, obviously the left side naturally becomes the same, right? And hence let it be third. From first,
Second and third, area of ADC is equal to area of triangle AB. ट्राइंगल का साइन बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर हो गई ये बात? एनी डाउट? इट्स अ वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम. ये भी एक फंडामेंटल थ्योरम है. कैन आई रब दिस? हाँ. Sir, ये जो हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है इज इक्वल टू हाँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. सर हम इससे ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. समथिंग बहुत अच्छा लगा इसने क्वेश्चन पूछा. Every pair of triangles which are congruent must be the same in terms of their areas, but it's not necessary that every pair of triangles which are equal in terms of their areas, right, may be same in terms of their congruency also, because the shapes are different. Congruency का मतलब क्या होता है? Shape और size दोनों same होना चाहिए, right? तो shape को, this is the symbol for the shape and this is for the sizes. Right? Very good question. हटाओ इसे. अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से except 3 to 4 students, all students involved होते हैं. Nice. Clear है? What is the area of the trapezium? Can anybody suggest me? Half into sum of the parallel side into height. Prove it. Question I. And obviously this is not a theorem. It's merely a question, right? So prove that in a trapezium ABCD, the area of ABCD is half into फिर सब समझ में आ रहा है ना? अभी तक इंटरेस्टिंग है या नहीं? 3 बातें की हैं अभी तक हमने. क्या? पैरेललोग्राम सेम बेस पर होंगे, बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे तो इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर एरियाज. ट्राइंगल्स जो कि सेम बेस पर होंगे, बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे, दे आर आल्सो इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर एरियाज, राइट? और तीसरा क्या किया हमने कि मीडियन किसी भी ट्राइंगल का उस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में बदल देता है जिनके एरियाज इक्वल, राइट? अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ट्रिपीजियम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ दिस ट्रिपीजियम इज AB plus DC into AP, right? And that AP is this. हाँ, वंश बताओ. So use on the diagonal BD. नो नीड. आप बताओ. आर्यन डायग्राम से ज्वाइन कर सकते. अच्छा, आदित्य कोई और? So we can construct a parallelogram APBC. AP BC. BC is not a parallelogram. So we can construct a parallelogram. We can take another point. You are talking about this now. So on the side of P, we can draw Also. another parallelogram. इस तरीके से, राइट? नहीं, वो भी नहीं करना. ये देखो, हम ये काम करेंगे. We will convert the entire trapezium into the form of a pair of triangle and a rectangle, or might be a square also, right? So this trapezium gets divided into 3 parts. Agreed or not? तो गिवन तो यही है, टू प्रूफ भी है. प्रूफ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. ठीक है, परपेंडिकुलर टू DC. दिस इज नॉट a construction, this is the height, right? Now, area of ABCD is what? It is the area of triangle APD plus area of rectangle ABQP plus area of
मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ऑफ ट्राइंगल BQ, right? Let us consider that this is H. Let AP equal to BQ equal to H. कर सकता हूँ या नहीं? अरे भाई AP and BQ are equal or not? Being parallel and being perpendicular also, right? So area of ABCD is half into base into height plus length into breadth, right? Plus half into QC into BQ. Clear? As simple as that. और BQ को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? H. Is that clear? यहाँ तक कोई डाउट? क्या AP को भी मैं H लिख सकता हूँ? ऐसा इसलिए किया because it would be easy for us to see out of the three terms that H, H and H may come out to be as a common. And the right side we have three terms separated by the pair of plus. As I am. And out of these three terms, we have H by 2 coming up as a common from the first and third, but not from second. क्योंकि यहाँ H by 2 है भाई, नहीं है ना? समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इन तीन टर्म्स में क्या H by 2 यहाँ है या नहीं? अरे भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? बोलो, कैन आई राइट इट इन दिस वे और नॉट? तो H by 2 कहाँ का कॉमन है? पहले और तीसरे में कॉमन है। क्या यहाँ है H by 2? चलो जबरदस्ती बना देते हैं, डेस्परेटली 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट वी डिड, आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2, राइट? अब तो आ गया H by 2. So we have H by 2 as a common. DP प्लस H by 2 आ गया ना, प्लस ट्वाइस ऑफ PQ, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये H by 2 नीचे आ गया, प्लस QC, राइट और नॉट? भाई इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? अगर मैं इसे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या H into PQ में कोई चेंज आ जाता है? It remains with the same. The whole purpose of writing the statement in the form of the multiplying 2 and divide by 2 is to have the easy common. The common in the form of H by 2 from this, H by 2 from this, H by 2 from this. Now this into this makes the first term. This into this makes the second term. This into this makes the third term. Right? And the moment it happens, DP, PQ क्या है? ट्वाइस ऑफ PQ है ना? तो मैं सिर्फ PQ लिखता हूं प्लस QC प्लस PQ, राइट? तो मैंने इस PQ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, PQ और PQ. Any problem? Now DP, PQ and QC. DP, PQ and QC makes what? This is what? DC. And this PQ is equal to AB or not? क्या PQ और AB equal है या नहीं? Opposite side, this PQ can be replaced as AB. Hence the answer. So this is what? Area of the trapezium is PQ. H क्या होगा? Height by 2 and sum of the parallel sides. कोई डाउट?
Clear है या नहीं? So it completes the answer. Please look at the answer all over again. And if you feel any kind of doubt or difficulty, please do ask. हटाओ उसे. परसों में इसका टेस्ट लेने वाला हूँ. इस वीक हम आज भी मिल रहे हैं, वेडनेसडे को भी मिलेंगे और फ्राइडे को भी मिलेंगे. परसों मैं पूछूंगा जो आज मैं बता रहा हूँ. कोई डाउट है इसमें? हटा दूं बेटा? नेक्स्ट, अभी हमने 3 थ्योरम्स को कवर किया है. फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिया था. अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ. दिस इज आल्सो सिंपली ए क्वेश्चन, इट्स नॉट ए थ्योरम. Again, the line joining the midpoints of all the 3 sides of a triangle. Convert the triangle into what? Into 4 congruent triangles. कर चुके हैं नहीं हम इस बात को? प्रूव भी कर चुके हैं ना? At the moment 4 triangles are congruent. Eventually their areas are also equal, and that's what I want to say in this question. Prove that the line joining the midpoints of all the sides of a triangle divide the triangle into 4 triangles which are equal in areas. ये प्रूव करना है. सेम आंसर है, लास्ट में लिख देंगे therefore area of 1, 2, 3 and 4 are equal. Is that clear? And that's what we did during the phase of quadrilateral chapter. हम कर चुके हैं quadrilateral के अंदर. ठीक है ना? तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. The moment you will prove that this and this all are congruent to one another, फिर आप सीधा लिखेंगे therefore area of 1 equal to area of 2, area of 3 and area of 4. No need to execute the answer. सेम है या नहीं? कर चुके हैं हम इस बात को, राइट? कौन सजेस्ट करेगा कैसे? हमने कैसे किया था, तो कैसे किया था? Can anybody suggest me? Rishabh, do you have any idea? Tell me. Sir, FEDB is a parallelogram. FEDB is a parallelogram. How? Sir, FE is equal to BD by midpoint theorem. FE is equal to BD. how come? Sir, as according to the How come we can say that FE is equal to BD? FE is equal to half of DC. Very good. So FE is equal to BD as well as parallel. As well as parallel. So what's the statement of the midpoint theorem? Sir, if the line passing through the midpoint of 2 sides of a triangle is parallel to the third side as well as the half of it. Excellent answer, right? And that's what he stated. That the line joining the midpoints of any 2 sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. That's what he already did. So FE is parallel with BC and FE is a half of BC. तो half of BC, D तो midpoint है, half of BC क्या हो गया? DC भी है और BD भी है. But right now our interest is FE becomes equal with what? BD. And FE is already parallel with BD. Pair of opposite sides parallel भी है, equal भी है. It makes this quadrilateral as a parallelogram, and diagonal divides this parallelogram into 2 triangles which are congruent. Similarly, this is also a parallelogram. Similarly, this is also a parallelogram. So this is congruent with this is congruent with this is congruent with this, and all the 3 statements makes each other congruent, right? And the moment all the 4 triangles are congruent with one another, their areas are eventually equal. Like it? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये 10th में भी सिमिलर ट्राइंगल में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे. क्या ये क्लियर है? अब मैं एक ऐसी थ्योरम कराने जा रहा हूँ आपको which is not there in the syllabus,
but it has immense amount of use not only in the 9th class, but in 10th also, 11th also, and 12th class. And I'm very much sure that this particular theorem will not be discussed, लेकिन हम इसे करेंगे. The medians of a triangle, लिखो. Medians of a triangle meet at a point which divides each of the medians, in the ratio 2:1. Divide each of the median in the ratio 2:1. मैं इसे करा रहा हूं तो मैं अपने टेस्ट में दूंगा भी. ये आज की 4th इंपॉर्टेंट थ्योरम है. थर्ड कौन थी? मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल divides the triangle into two triangles which are equal in area. देखो what I am saying right now. प्लीज सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. राइट, यहाँ गिवन क्या है? एक गिवन ये है कि BE and CF, ये गिवन है, BE and CF are medians and they are meeting at a point G. And let this point of intersection of the pair of medians is regarded to be G itself. हमें प्रूव करना है AD is also the median and the point G divides all the three medians in the ratio DG by GE as 2:1. कहने का मतलब है this point G divides this median AD in the ratio AG by GD as 2:1. If suppose AD happens to be 9 centimeter, so AG is 6 centimeter, GD is 3 centimeter. 6 by 3 ratio क्या है? 2:1. Ratio is what? Ratio is not the exact dimension. Ratio just compares the two quantities available to us in terms of their size, in terms of their shapes also. यहाँ देखिए. So given a triangle ABC in which DE and CF are medians, meeting at G. To prove AD is also the median and AG by GD, BG by GE and CG by GFS is to be right. ये हमें प्रूव करना है. अब एक फिगर ये है, क्या ये पैरेललोग्राम है? बोलो. तो क्या ये डायगोनल हम कह सकते हैं बाइसेक्ट करने? आंसर लिखते समय डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर लिखकर आंसर गलत कर दिया. ये फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है बट नेवर बी ए पैरेललोग्राम. और हमारा होल पर्पस है BC और GH को, GH और BC को डायगोनल्स प्रूव करना. अरे जब ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम है ही नहीं तो डायगोनल्स कहाँ से होगा? डायगोनल बाइसेक्ट कहाँ से करेंगे? और ऐसी अनगिनत बार हमने पिछले 12-13 सालों में देखा है कि बच्चे AD इक्वल टू BH कर पूरा आंसर एग्जीक्यूट कर देते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो याद किया हुआ है.
याद नहीं करना, समझना है, इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया इस बार। और ये भी बताया कि कहाँ गलती होती है। क्या वो बात समझ में आई है या नहीं? अब जब हमने AG इक्वल टू GH लिया, जस्ट लुक एट दिस, दो इट्स रफ बट एट द सेम टाइम इट सीम्स टू बी द quadrilateral in the form of a parallelogram, right or not? समझ में आई ये बात? तो हमारा पर्पस है यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट करना, जो क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी ए पैरेललोग्राम। और वो तब पॉसिबल होगा जब AD इक्वल टू DH नहीं हो, AD इक्वल टू DH नहीं, AG इक्वल टू GH होगा। यही बात समझानी इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद आंसर खत्म है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा तो कैसे करूंगा, कौन बताएगा? आई एम नॉट हियर टू गिव यू द आंसर ऑन द बोर्ड। RD शर्मा, RS सगर सर बुक के अंदर आंसर है इसके। You just think what I want to say, and now my next question is to make this quadrilateral as a parallelogram. Who will tell me the answer? So GD equal to DH नहीं, उसका आंसर ही नहीं आएगा। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। GD equal to DH, वो तो हम ले ही नहीं सकते। हम कंस्ट्रक्शन के अंदर GD को इक्वल टू DH नहीं ले सकते, वो तो प्रूव करना है, वो तो प्रॉपर्टी है। द मोमेंट इट इज ए पैरेललोग्राम, then we can say that GD is equal to DH and BD is equal to DC, because the diagonals of a parallelogram bisect each other। तो हम उसे कंस्ट्रक्शन में कैसे लिख देंगे? कैसे करेंगे? लास्ट 15 seconds, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Look in the triangle ABH. In the triangle ABH, F is the midpoint of AB or not? F is the midpoint of AB or not? G is the midpoint of AH or not? G is the midpoint of AH or not? Hence we can implement midpoint, which makes what? That GF is parallel with BH. If GF happens to be parallel with BH according to midpoint theorem, अरे इस ट्राइंगल के अंदर F midpoint है या नहीं? मीडियन है भाई, F midpoint है। और जब मैंने AG equal to GH लिया तो हुआ क्या? AH is equal to what? AG equal to GH, and G happens to be the midpoint of AH। ये बात क्लियर है या नहीं? And hence in this triangle there are two midpoints of these two sides, and which forces us to use the midpoint theorem. The line joining the midpoints of the two sides of a triangle in triangle ABH is parallel to the third side. FG is parallel BH, which makes GC parallel with BH. तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गई। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ACH, G is the midpoint of this, E is the midpoint of this, G is parallel with HC, right? And hence कोलिनियर है भाई, BG is parallel with HC। ये इसके पैरेलल हो गया using this triangle, और using this triangle ये इसके पैरेलल हो गया। तो this quadrilateral becomes what? A parallelogram, right? तो प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ABH FG is parallel with BH, which implies GC parallel with, right? Similarly, in triangle AXC GE parallel with HC implies me what? BG parallel with HC. This is A, this is B. From A and B, quadrilateral की opposite sides parallel है, तो इसका मतलब क्या हुआ? G B H C is a parallelogram। क्या ये बात क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? How does I make this as a parallelogram?
and the moment it happens, the diagonals of a parallelogram bisect each other. So GD is equal to DH. Is that clear? This equal to this. ये दोनों साइड इक्वल हो गई. अब हम AG GD 2:1 कैसे करेंगे? Sir, H is equal to GH. Sir, H is equal to 2GD. AG is equal to 2 twice of क्लियर है या नहीं है? तो क्या इस क्वेश्चन को हटा दूं? आई थिंक समझ में आ जाओगे. This is nothing but the entire details make the point as a parallelogram. तो AG equal to GH है और GD और DH क्या है आपस में? इक्वल है. तो I can write GH as GD plus DH. देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते थे, वो तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं. ये दोनों इक्वल हैं तो मैं GD प्लस GD यानी कि ट्वाइस ऑफ GD लिख सकता हूँ या नहीं? तो AG बाई GD कम्स आउट टू बी व्हाट? आ गया या नहीं? तो आप इसी बात को यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे. एंड व्हाट्स दैट? AG इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ GD. तो AG बाई GD कम्स आउट टू बी एज 2:1. एक साइड बात आ गई है, राइट? As FG is parallel with BH and FG is the half of BH and BH is equal to what? GC. BH GC के बराबर है या नहीं? तो I can replace BH with GC. भाई BH and GC इक्वल है तो मैंने BH की जगह यहाँ तक तो है पूरी मिडपॉइंट थ्योरम, और BH की जगह क्या लिख दिया हमने? GC. So what that means? That we have FG by GC as 1/2 or GC by FG as GC by FG as what? ये भी आ गया, ये भी आ गया. लास्ट के लिए लिख देंगे सिमिलरली, राइट? वी विल बी हैविंग व्हाट? BG by GE also 2:1. चाहो तो हम यहाँ से कर सकते हैं. दिस इज हाफ ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. हो गया नहीं? And hence BG by GH, PG by GE in fact 2:1. उसको लिखने की जरूरत नहीं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. आई थिंक समझ में भी आ गया होगा आपको, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर इन द स्किल्स. And I don't think so that would be executed in the school. It would really be appreciated if the theorem would be executed in the school. आपने खत्म कर लिया ना टॉपिक? ऑलमोस्ट होने वाला, इसको अभी तक तो हो ही नहीं था ना. हाँ, ये तो शुरुआत की तो थ्योरम है, ये क्लियर हो गया ये. अब हमें एक बात पता लग गई क्या? That the point of concurrency, this G is known as what? Point of concurrency. Concurrency means where the three or more than three line meet, right? Is known as concurrent point. The point of concurrency of the three medium is known as centroid. जिसे हम क्या कहते हैं? तो G is known as centroid. Centroid is a point where the three medians of the triangle meet, and the centroid of the triangle divides the median in the ratio 2:1. क्या ये याद रहेगा? लिख लो इस बात को. The centroid of a triangle, the centroid of a triangle divides the median. The centroid of a triangle divides the median in the ratio. The centroid of a triangle divides the median in the ratio 2:1.